Hello everyone, I'm Surabhi Verma. I'm founder director Sparsh for Children. My organization works with children with various difficulties like autism, attention deficit, learning difficulties, to name a few. We have been helping children since 2005, and today the topic of my podcast is autism and toileting. So, during this time when we have been recording the series, I have lots of parents who have come up and have asked for me to talk to everybody about or explain to them why going to the washroom, why peeing and pooping is difficult for our children on the spectrum. Why do they find it difficult to go and just learn कि जो टॉयलेट है या पी करने जाना है, पूप करने जाना है, वो हम अपने आप वॉशरूम के अंदर टॉयलेट सीट पे बैठकर बच्चे कब सीखेंगे, उनके बच्चे और क्या स्ट्रैटेजी है. So before we get into what are the strategies, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफ़िकल्टी आती क्यों है. हमारे बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर हैं, उन्हें वॉशरूम जाकर पी करना या पी करना एंड पूप करने में प्रॉब्लम कहाँ है. So if that is your concern and that is what you want to know, then the next 3 or 4 series or episodes are going to be very important for our learning why and then how can we manage these issues in our children. What are various strategies that can help our children to become independent in their toilet skills. So toileting जो एक skill है, it is heavily dependent on our central nervous system and how our nervous system gives the clue to our brain and to our body. So this is all related and part of one process. So therefore, to teach the skill of toileting, we need to understand the reasons. So to teach the skill of toileting, it is important to understand the reasons why there is a struggle. So reason number 1 is interoception. So what is interoception? Interoception is our body giving signals to our brain to act on something. For example, if we are hungry, जब हमें भूख लगती है तो हमारी stomach से signals जाते हैं हमारे brain के लिए, which tells our brain that we are feeling hungry. Same thing, our bladder is full और मुझे washroom जाना है. ये एक body का signal है जो हमारे brain में जाता है, जिससे कि बच्चे को या हमको ये पता लगता है that we need to go to the washroom to pee. And same is for pooping. अगर we want to go to the toilet and we want to go for the to poop, then the system, the body has to tell this information to our brain. Now, when there is a breakdown in this information, when the child does not receive the signal, so many children have poor or delayed interoception process. So their body will not be able to give the signal at the right time for them to act, or their body may not perceive the signal at the correct time to understand कि उनको washroom जाना है. So दोनों चीज़ों के अंदर डिले हो जाता है हमारे बच्चों के साथ, जब उनकी बॉडी जो है वो करेक्ट टाइम पे सिग्नल नहीं देती और वो सिग्नल को परसीव नहीं कर पाते कि जो ये सेंस आ रही है इसका क्या मतलब है. व्हेन डू आई अंडरस्टैंड कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है और मुझे कितनी देर में जाना है. कैन आई होल्ड और डू आई नीड टू गो नाउ. ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंटरोसेप्शन सेंस ऑर्गन सेंसेस दैट गो टू आवर ब्रेन, एंड दैट इज वेयर देयर इज अ गैप. रीजन 2 is a sensory dysfunction. Toilet is a very sensory heavy environment, right? So for example, cold toilet seat, different smells in the toilet. We can be using air freshener in the toilet, smells of soap, smells of hand wash. So there are lots of different smells in the washroom. Then again, the sudden sounds. For example, जब tap open होता है या जब एकदम से flush की sound आती है. So that also again is a very strong sensory
input that goes in. Body position, changes in body position is also extremely standing. Suddenly we have to take a different body position. So we have to go into a sitting and sometimes squatting, depending upon what type of toilet system we have in our house. So these are different. We have to be without clothes, or we have to be semi-clothed. So again, so all these steps require different sensory integration processes to be in place for our children to feel comfortable to go into the washroom. किसी बाथरूम, किसी घर के अंदर बाथरूम के अंदर एक अलग तरीके का echo होता है, which our children can find very difficult to adjust to. Sometimes our children love exhaust fans, sometimes they're very scared of exhaust fans. तो जब exhaust fan एकदम से parent on करते हैं या fan on करते हैं बाथरूम के अंदर, तो children get very distracted by it, or they may get very scared by it. So depending upon every child's sensory abilities and sensory integration program, how their senses are integrated, the child will react differently when they enter the toilet. So we have to remember that if the child is avoiding going to the washroom, the child might be avoiding a sensory overload and not the whole process of going to the washroom. The third reason is need for predictability and control. Diapers will bring in control. Diapers are predictable environment. They have been in diapers since they were very young. जब बच्चे बहुत छोटे से, जब से उनकी understanding develop हुई है, they have been in diapers. So suddenly asking them to remove a diaper and go into the washroom requires a change and unpredictable environment. So therefore they will prefer to be in the diaper. Second, diaper also gives them a sense of control. What does that mean? कि I can go to the washroom when I want to go. अगर मुझे टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो उसके लिए either I have to be dependent on other people, I have to make sure the bathroom is empty, and then I have to go, I need to figure out bathroom है कहाँ पर. So there are a lot of things that suddenly become not in their predictable routine. So therefore control is more in diapers and the control is less when we have to go to the washroom. Private in the sense that मैं कर्टन के पीछे छुपकर भी पॉटी कर सकता हूँ. Nobody else needs to see me, right? मैं किसी घर के कोने में लाइट्स ऑफ करके वॉशरूम कर सकता हूँ. Nobody is going to see me. I can continue what I am doing. Sometimes हमारे बच्चे they are involved in a fun activity. They are involved in an activity that they are enjoying, and even if they don't want to stop to go to the washroom. So therefore they can continue to do the same activity if they are in a diaper. So therefore it becomes a matter of control and predictability for our children. So जब हमें टॉयलेट जाना है तो मुझे ये जो मैं खेल रहा हूँ मुझे रोकना पड़ेगा. मुझे वो environment जो टॉयलेट का है with different sensory input, it's very difficult to manage, and I have to have somebody with me at that time. I may feel very scared looking at the toilet pot कि ये flush होता है तो ये पानी कहाँ चला जाता है. Yeah, it is sensory so much fun that I don't want to sit, but I want to keep flushing and seeing कि पानी कहाँ जा रहा है. So it can be any of these things as well, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो टॉयलेट जाने से घबरा रहे हैं या वो जाना enjoy नहीं कर रहे हैं, and they prefer diaper over toilet. Fourth reason can be previous pain or negative feeling of negativity attached to toileting. कई बारी parents have been थोड़ा forceful हो जाते हैं बच्चों के साथ. हम ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे हमारे autism के बच्चों के साथ stomach issues होते हैं, gustatory issues होते हैं, उनको constipation की problem होती है, उनका stool कई बारी बहुत hard होता है. So they have in the past got a negative experience, and that negative experience also feeds in. तो वो अपना जो टॉयलेट का टाइम है उसको एक नेगेटिव टाइम सोच लेते हैं क्योंकि उन्होंने लिंक कर लिया है. बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन, पेरेंट्स से डांट पड़ी है, या पेरेंट्स हैव बीन वेरी हार्ड कि नहीं बैठ के करना है, विदाउट मेकिंग श्योर कि उनके सारे स्किल सेट्स इन प्लेस हैं कि नहीं है. समटाइम्स वी एज पेरेंट्स, समटाइम्स वी एज थेरेपिस्ट, we are a little hard on our children and we want them to learn a particular skill at particular time. So therefore, so they have attached a negative feeling
to toileting and therefore they don't want to take off the diaper and go to the washroom and sit on a toilet seat, right? Next and very important is social awareness. Our children on spectrum, जो उनका diagnostic criteria है, उनका जो social skills हैं वो compromised होते हैं. So therefore for our children to understand that मेरी age 5 years की है या I am 5 years old, so I can't, it is socially inappropriate to poop or pee in diapers. It is socially very inappropriate कि मैं सबके सामने अपने कपड़ों के अंदर पी कर रहा हूँ. ये जो awareness है social की, जिसकी वजह से हम motivate होते हैं वॉशरूम जाने के लिए. छोटे बच्चे अपने पीयर्स को देखकर, अपने ब्रदर सिस्टर्स को देखकर भी मोटिवेट होते हैं टू यूज द वॉशरूम बिकॉज दे थिंक इट इज सोशली करेक्ट थिंग टू डू. अब हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, बिकॉज दे लर्न लिमिटेड स्किल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट और उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं. सो वो ये एनवायरनमेंट से क्लू पिकअप नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द राइट एज टू गो टू द वॉशरूम. या मेरे साथ के सब फ्रेंड्स कर रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, मेरी दीदी वॉशरूम यूज कर रही है, मेरे पेरेंट्स वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी वॉशरूम में जाकर ही पी या पूप करना है. सो ये जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत सारे बच्चों के अंदर मिसिंग होती है. इसलिए कई बार पेरेंट्स कहते नहीं, हमने इन्हीं वीडियोस भी दिखाई हैं बहुत बारी, मैं खुद भी गई हूँ या गया हूँ, फादर टेल्स मी या मदर टेल्स मी, कि हमने मॉडल करके भी दिखाया मगर इसको समझ में नहीं आता. एंड दैट इज बिकॉज दे आर सोशली नॉट अवेयर दैट what is it that they want or what is it that the parent is trying to teach them. So if these are the reasons, then toileting is not a behavior problem, then toileting is a regulation problem and we need to फर्स्ट मेक श्योर दैट हम बॉडी रेगुलेशन बच्चे को सिखाएं और उसको इसके लिए रेडी करें बॉडीली एंड देन स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजीज एंड देन स्टार्ट विद एक्चुअल टॉयलेटिंग एंड एक्चुअल पीइंग एंड pooping in the washroom.